friends, welcome back to my channel. It's me Vedika and आज हम बात करने वाले हैं about मंडला आर्ट. So मंडला आर्ट आपको definitely पहले से पता होगा, and if you don't know then मंडला आर्ट is basically छोटी छोटी and बारीक बारीक डिज़ाइंस जो कि बनाई जाती है on a piece of paper using circles, dots and other sorts of geometric shapes. So ऐसी डिज़ाइंस आपने काफ़ी बार चद्दरों में देखी होगी एंड काफ़ी अलग अलग जगह पर देखी होगी. सो दिस इज़ कॉल्ड मंडला आर्ट एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट coloring mandala arts. So the main idea to color mandalas is to increase your focus, improve your concentration, relax yourself, release your stress, anxiety, and basically do some constructive work instead of watching phone and all. So इसीलिए मैंने भी एक मंडला कलरिंग वाली बुक ली थी, which is this. Now this is not proper mandala art wali book, but the concept behind this and the mandala book is exactly the same. Basically जो मैंने आपको बोला कि उसमें बारीक बारीक डिज़ाइंस होती है, इसमें भी वही है, but I wanted a little bit of variation, so I got the animals and birds वाली book जिसके अंदर अलग अलग animals and birds बने हैं और उनके अंदर डिज़ाइंस बनी हैं. एंड मंडला की जो कलरिंग बुक्स आती हैं नॉर्मल जो ऐसे गोल गोल वाली डिज़ाइंस आपने देखी होगी वैसी डिज़ाइंस होती हैं. एंड द प्राइस ऑफ दिस बुक जो मेरे पास है that is of ₹100. I got it from a local store. You can even buy this online. And जो मंडला वाली कलरिंग बुक्स आती हैं their pricing starts from approximately 100 से लेकर स्टार्ट हो जाती हैं सारी बुक्स from 100 to 300 रुपीज़. नाउ मैंने ये जो कलरिंग बुक ली है, मैंने ये कलरिंग बुक फॉर अडल्ट्स वाली ली है बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा बारीक डिज़ाइंस हैं. एंड जो किड्स वाली है वो भी आप ले सकते हो, उसके अंदर थोड़ी कम बारीक डिज़ाइंस होंगी. सो मुझे ऐसा लगा दैट वाइल कलरिंग इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है एंड जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना वो नहीं आते हैं दिमाग में. यू गेट पॉजिटिव थॉट्स, you feel more good about things, and you feel that you're not wasting that free time on watching your phone. Instead you're doing something constructive. So this was actually the main idea of coloring on mandala books, which I thought, and that's why I bought it and my experience was very good. Yes, uske baad now once you have bought it, if you want to, so आपको कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए to color it. Now सबसे पहले मुझे इतना नहीं पता था कि क्या क्या यूज़ किया जाता है, so I started with sketch pens. Now you can use sketch pens, but the पेपर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. लाइक स्केच पेन्स का छापा ज़्यादा पीछे नहीं आता है, बट या थोड़ा थोड़ा दिखता है. सो वैसे तो ठीक है थे स्केच पेन्स भी, बट देन आई थॉट कि स्केच पेन्स के अंदर जो कलर के शेड्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं. सो उसके बाद मैंने ट्राई किया कलर पेंसिल्स विच आई गॉट फ्रॉम फेबर कैसल, एंड इसके अंदर 24 शेड्स हैं. एक्चुअली मुझे ये भी कम पड़ते हैं, बट स्टिल इट्स गुड. एज अ बिगिनर यू कैन यूज़ दिस वन, एंड इससे कलर करना काफ़ी ईजी होता है. नाउ दीज आर वाटर बेस्ड पेंसिल्स, सो इफ़ यू वांट दैट वाटर कलर इफेक्ट, सो आप इससे कलर करने के बाद पानी से इसे स्मच कर सकते हो जिससे कि काफ़ी अच्छा वाटर कलर इफेक्ट आता है. सो या दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. देन यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल पेन्स, अलग अलग शेड्स में आप ले सकते हो. यू गेट ऑल दीज थिंग्स ऑनलाइन, सो या यू कैन रिसर्च. एंड देन यू कैन यूज़ some brush pens as well. मैंने brush pens का रिव्यू भी किया है in my video, so you can watch that, and आप अपने accordingly brush pens ले सकते हो. I do have brush pens, but I'm not having a variety of shades, so मैंने इसलिए brush pen से भी try नहीं किया है. But yeah, it works good, and most of the people use that to color. So yes, you can either buy some color pencils if you want. Now मैं बोलूँगी कि at least you should have 24 shades
of color pencils or even brush pens to color this book, because shades की काफ़ी कमी पड़ जाएगी and then you will end up using the same shades, but you can try it. एंड देन एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, नाउ डेज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता बिकॉज स्कूल का काम होता है एंड देन पढ़ाई करनी होती है ये सब, सो मेरे पास बिल्कुल टाइम वैसे तो नहीं होता है, बट स्टिल आई ट्राई टू कलर एटलीस्ट फॉर 20 minutes or maybe 15 minutes sometimes, because it really helps in focusing better. So you can do this once in a day or even twice a week if you get less time. So it's very good and I think that you should try this. Yeah, it takes approximately 2 to 3 days to complete a whole drawing. So yeah, it consumes a lot of time and it's actually good because you're paying that much. Yeah, this is the main objective behind mandala coloring books and this is why people buy them and use them. So yeah, if you want to try this, do try and tell me in the comment section your experience, how was it. So if you like the video, don't forget to like, share this video with your friends, do subscribe to my channel if you have not already for more such videos, and I'll meet you very soon. Until then, goodbye.